Yes, two, sir. three. Okay. Now students, once again present here after taking a long video for the class 8 economic section factor of production. In this section you learn about what is input, output and process. Then after factor of productions. Dear students, class 8 factor of production. Okay. Now input. What is input? The input refers to the production process required to produce final product. That means all the substances that is required for the production of final goods. For example, I have to require हमें एक क्या बनाना है, एक बेंच बनाना है. बेंच में इनपुट का हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, वुड हो जाएगा. देन आपके कील, जो लोहे की कील वो आ गया. तब फाइनल क्या बन गया, बेंच बन गया. इट इज कॉल्ड इनपुट. तो आपने क्या तो व्हाट इज इनपुट? इनपुट दिस प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्ट. For example, this that substances is called input. For example, fertilizers, HYB seed, pesticide for agriculture. If any farm कोई किसान प्रोडक्शन करते हैं, क्या प्रोडक्शन करना चाहता है वो? यदि किसान कोई भी किसान जो है फसल का प्रोडक्शन करना चाहता है, उसमें इनपुट क्या लगेगा? फर्टिलाइजर, HYB seeds. HYB seed for what? High yielding variety seeds. Pesticide कीड़े मकोड़े को मारने वाला. और watering, this is called input. Now factor of production. Factor of production, there are four main factor of production. How many factor of production? There are four main factor of production: land, labor, capital, entrepreneurship, and technology. Now, land, labor, capital, technology also. Now land. Land refers to not only geographical land. In this factor, you also cover all the natural resources like water, soil, minerals and forest. Land factor production, technology, resource used in the land here refer to not only geographical but all the natural resources used in the production process such as soil, water, minerals and forest. Labor. Labor means what? If any person do work, labor means what? Human effort applied to the production process is called labor. This include both physical and mental effort. वैसे व्यक्ति जो कोई भी प्रोडक्शन करने में, कोई भी वस्तु बनाने में फिजिकली शरीर से या लगता हो या तो फिर मेंटल मानसिक रूप से काम करता हो, तो या दोनों काम करता है, दिमाग भी लगा रहा है और शरीर भी काम कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं? लेबर बोलते हैं. एग्जाम्पल में क्या आपको बताया गया भाई? टीचर्स, डॉक्टर्स, फार्मर, सिक्योरिटी गार्ड, कंस्ट्रक्शन वर्कर, these are called under what? Labor. हमको बेंच बनाना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी. क्या करेगा भाई? लकड़ी चीरेगा, लकड़ी को इक्वल करे, समतल करेगा, बराबर चिकना करेगा. इसमें लेबर एफर्ट, इसमें लेबर की जरूरत पड़ेगी. नाउ लेबर के बाद क्या है? लेबर क्लासिफाई इनटू डिफरेंट कैटेगरी. अनस्किल्ड लेबर, जो कोई कुछ नहीं आता, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड. टीचर, डॉक्टर, scientists, these are called skilled labor, and those who make the software, it is called what? Highly skilled. Okay. Now capital. Without capital we can't make any goods. Capital required. Capital classified into two categories: what? Fixed capital, working capital, and then after human capital. I have already discussed here human capital. Fixed capital, one time investment used long time of year. For example, capital, land, building, tools, machine, these investments for what? Fixed capital. Working capital, the capital required use what? Short period of time and use regularly for repair work, painting, other works. Okay. And salary payment of his worker, salary payment, these are called working capital. Now human capital, but doctor, teacher, these are called what? Working capital, human capital. Now entrepreneurship. Entrepreneurs means what? By businessman. Who will do business? बिजनेस कौन करेगा? जो कैपिटल रहेगा, जो पूंजी रहेगी, वो इसके भी होना जरूरी है. इसके बिना कोई बिजनेस नहीं चलेगा. एंटरप्रेन्योरशिप होने से टेक्नोलॉजी, विदाउट टेक्नोलॉजी कांट डू दिस. टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन जरूरी है. These are the four different factors. Now we can conclude the chapter. In this topic today we learn about factor of production, technology, land, labor, capital, entrepreneurship. I think you understand well, and I think in next video you will understand well. और
If you understand well, kindly like, share and subscribe it. Thank you. Have a nice day.